गलद्रक्तमुण्डावलीकण्ठमाल महाघोररावा सुदंष्ट्राखराल विवस्त्रा श्मशानालयामुक्तकेशी महाकालकामाकुलकालिकेयम् भुजे वामयुग्मे शिरोसिं दधानः वरं दक्षयुग्मे भयं वै तथैव सुमध्यापि तुङ्गस्तनभारनम्र लसद्रक्तसृक्तद्वयासु स्मितस्य शवध्वन्वकर्णावतंससु केशी लसत्प्रेतपाणिं प्रयङ्कैव काञ्ची शवाकारमञ्चादिरूढा शिवाभिश्चतुर्दिक्षु शब्दायमानाभिरेजे विरञ्च्यादिदेवस्त्रयस्त्रे गुणास्मिन् समाराध्य कालिं प्रधाना बभूभुम् अनादिं सुरादिं मकादिं भवादिं स्वरूपं त्वदीयं न विन्दन्ति देव जगन्मोहिनीयं तु वाग्मादिनीयं सुवृष्णोषिणी शत्रुसंहारिणीयं वचस्तामनीयं किमुच्चाटनीयं स्वरूपं त्वदीयं न विन्दन्ति देवम् इयं स्वर्गधात्री पुनः कल्पवल्ली मनोजास्तु कामान् यथार्थ प्रकुर्यात् तथा ते कृतार्थ भवन्नीति नित्य स्वरूपं त्वदीयं न विन्दन्ति देव सुरापानमत्ता सुभक्तानुरक्त लसत्पूतचित्ते सदा विभ्रवत्ते जपाध्यानपूजा सुदादयितभाङ्क स्वरूपं त्वदीयं न विन्दन्ति देव चिदानन्दकन्धन् असन्मन्धमन्धं शरश्चन्द्रकोटिप्रभापुञ्जबिभ्रं मुनीनं कवीनं हृदि द्योतयन्तं स्वरूपं त्वदीयं न विन्दन्ति देवम् महामेघकालिं सुराक्तापि शुभ्रं कदाचित्रविचित्रकृतिर्योगमायं न बाला न वृद्धा न कामातुरापि स्वरूपं त्वदीयं न विन्दन्ति देवम् क्षमास्वापराधं महागुप्तभावं मया लोकमध्ये प्रकाशीकृतं यत् तवाद्यानपोतेन चापल्यभावात् स्वरूपं त्वदीयं न विन्दन्ति देव यदि ध्यानयुक्तं पठेद्यो मनुष्यस्तदा सर्वलोके विशालो भवेश्च गृहे चाष्टसिद्धिर्मृते चापि मुक्तिं स्वरूपं त्वदीयं न विन्दन्ति देव स्वरूपं त्वदीयं न विन्दन्ति देव स्वरूपं त्वदीयं न विन्दन्ति देव।